चलो, see, now we are interested to calculate magnetic field inside the solenoid. याद है formula? Magnetic field inside the solenoid for ideal solenoid. What is the formula? B is equal to mu naught Ni. Ni. N is the number of turns per unit length that we are deriving from Ampere circuit law. So आपको मतलब एम्पेयर सर्किट ला खेलना आ जाएगा इफ यू डिराइव दिस वन, ओके. अदरवाइज क्वेश्चंस में थोड़ा तकलीफ हो जाएगा, अंडरस्टैंड करो. सो इसमें वी आर ट्राइंग टू फाइंड द मैग्नेटिक फील्ड एंड यू नो द मैग्नेटिक फील्ड विल बी लाइक, यू नो, सॉलिड कैसे रहेगा? इट इज कमिंग अपर साइड में डॉट्स एंड डाउनवर्ड्स में इट इज गोइंग क्रॉस, ओके, डॉट्स एंड क्रॉस वाला, राइट. आई वांट टू फाइंड द एक्सिस में, आई वांट टू फाइंड द मैग्नेटिक फील्ड, magnetic field along the axis. Okay. Chalo. So this is dot. This is cross. Okay. And you know this is ideal solenoid. इसका radius है, this is axis, right? इसका radius है r. And number of turns को n बोलते हैं, and small n is the number of turns per unit length. Okay, number of turns per unit length. I want to find the magnetic field along the axis at point P. Inside there is a uniform magnetic field. इधर भी होने दो, इधर भी होने दो, magnetic field is same. And edges में it will decrease by 2, right? Mu naught Ni by 2 edges में. Okay. So by using Ampere circuit law, I want to find the magnetic field because we don't know Biot Savart's law, because बहुत difficult है. B dot dl लगा के solve करना बहुत difficult है. Okay. So first step is what? Ampere circuit law. Wherever you want to find the magnetic field, I want to make a Ampere's loop. Ampere's loop बनाने का. That can be any shape. Okay. So we are making a Ampere's loop as a rectangle. This is Ampere's loop that should pass us through the point P. Okay, Ampere's loop banana that should pass through the point P, and write the formula. Okay, and write the formula. Closed integral B dot dl is equal to mu naught times of I inside. This is the formula for Ampere circuit law. Our interest is to calculate magnetic field this point P. Name it karo A, B, C, D. Okay. And इसका length को we call as x is the length. X is the length. Okay. Okay. Now second step is what? We have to give the loop direction. Loop direction देने वाला है. Okay. Either clockwise or anti-clockwise. But dots है ना? Dot का positive आने के लिए we are putting anti-clockwise loop direction. So मैं curl the fingers in the direction of the loop direction. The thumb current direction is positive. The current direction is always positive here. That's why I inside के जगह में positive आने का. That's why we are putting anti-clockwise. समझ में आ रहा है? Okay. Then क्या करने का? Magnetic field check करो. Magnetic field कैसे रहेगा? Inside tell me magnetic field कैसा है shape? पहले tell me magnetic field inside. देखो, curl the fingers. The thumb indicates the direction of current. Curl the fingers in direction of magnetic field, right? ऐसा रहेगा. और if you see down में, देखो, thumb indicate direction of current and curled fingers indicate direction of magnetic field. So magnetic field is like this. Okay, this is magnetic field direction. Outside magnetic field is how much? Outside magnetic field is 0. Last class I told you. Why? If you see in the top में thumb indicate direction of current, magnetic field इस point में तो इस तरफ है, इसके वजह से उसी point में इस तरफ रहेगा, दोनों cancel हो जाएगा. Outside तो नहीं है. Ideal solenoid में outside magnetic field is 0. Okay. Now we have to apply this B dot dl for AB connector, BC, CD and DA. Okay, and DL vector should be taken along the loop direction only, right? देखो, in this में DL is like this, ऐसा है. In this में DL is ऐसा. In this में DL is in this direction, and in this में DL is in this direction. Along the loop direction we are taking the DL. Okay, now we are applying Ampere circuit law for closed integral from A to B apply करने का. B dot dl plus closed integral from B to C apply करेंगे. B dot dl plus closed integral
from C to D B dot dl plus closed integral D to A B dot dl is equal to mu naught times of I inside. ओके ना, एक एक का हम लोग देखने वाला है. देखो फॉर ए टू बी टेल में मैग्नेटिक फील्ड एंड डीएल कितना होगा. मैग्नेटिक फील्ड एंड डीएल इन द फ्रॉम ए टू बी टेल में. इन द ए टू बी में मैग्नेटिक फील्ड एंड डीएल. मैग्नेटिक फील्ड इज आउटसाइड कितना है. आउटसाइड में जीरो. जीरो. जीरो इंटू समथिंग इज जीरो, मतलब ये तो जीरो हो जाएगा. राइट. नो सी टू बी बोलो. मैग्नेटिक फील्ड आउटसाइड इसमें तो रहेगा, बट डायरेक्शन बोलो. इनसाइड देखो, आउटसाइड तो नहीं है, ठीक है, इनसाइड तो रहेगा ना. इनसाइड मैग्नेटिक फील्ड इज लाइक दिस, डीएल इज लाइक दिस. एंगल समझ. 90. 90 समझ में आ रहा है. डीएल इज लाइक दिस, मैग्नेटिक फील्ड इनसाइड मैग्नेटिक फील्ड इज ऐसा ना. सो इट इज 90. सो cos 90 इज जीरो. सो बी टू सी भी जीरो हो जाए. नो टेल मी सी टू डी वाला. सी टू डी में मैग्नेटिक फील्ड एंड डीएल दोनों सेम डायरेक्शन. सो कौन सा है. बी डीएल cos जीरो. किसका. फ्रॉम सी टू डी. हाँ, कैन यू टेल फ्रॉम डी टू ए कितना होगा. डी टू ए मैग्नेटिक फील्ड. Zero. मैग्नेटिक फील्ड ऐसा है एंड ये एंगल 90 राइट. सो इट इज जीरो. सो ये भी जीरो हो जाएगा. ओके सो एक ही बचा है इज इक्वल टू म्यू नॉट टाइम्स ऑफ आई इनसाइड. ओके बी इज कांस्टेंट, मैग्नेटिक फील्ड इज यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड है. सो बाहर आ जाएगा. डीएल 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 इफ यू ऐड डीएल 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 इस लेंथ का इज नथिंग बट एक्स ओनली, वेटिंग एक्स राइट. सो बी इंटू एक्स इज इक्वल टू म्यू नॉट टाइम्स ऑफ आई इनसाइड. नो आई इनसाइड फाइंड करेंगे. आई इनसाइड कैसा करंट के. इसके अंदर में टोटल करंट इज आई. वेदर करंट इज फ्लोइंग, टोटल करंट इज आई इज दिस. इन दिस लूप में टोटल करंट आई नहीं है ना. ओके यू नो स्मॉल एन इज नंबर ऑफ टर्न्स पर यूनिट लेंथ राइट. सो आई कैन राइट 1 यूनिट लेंथ में n है तो नंबर ऑफ टर्न्स पर यूनिट लेंथ n टर्न्स पर यूनिट लेंथ. ओके यू टेल मी फॉर 2 टर्न्स कितना होगा. फॉर 2 टर्न्स मतलब यूनिट लेंथ में n टर्न्स आर देयर. सो 2 लेंथ में 2 सेंटीमीटर लेंथ में 2n 2n. राइट. लाइक दिस x लेंथ में टर्न्स कितना है. टर्न्स पर यूनिट लेंथ कितना है. X. x लेंथ में nx. nx टोटल मतलब सी टोटल नंबर ऑफ टर्न्स इज n. बट इसके अंदर में नंबर ऑफ टर्न्स वी हैव टू फाइंड राइट. कितना टर्न्स है. सो वी आर यूजिंग द डेफिनेशन एंड वी आर ट्राइंग टू फाइंड नंबर ऑफ टर्न्स. जिसमें नंबर ऑफ टर्न्स आर देयर इन दिस में right. In this total length में x into the number of turns is nothing but total number of turns in this loop में. okay current का current in one turn, current in one turn is I. current in one turn is I. how many turns are there. nx turns में कितना करंट आएगा. n x I. into I Yeah. राइट. मतलब इसका लूप के अंदर में करंट इतना टर्न्स है. सी टोटल नंबर ऑफ टर्न्स भी मल्टीप्लाई करने के लिए करंट. सो आई इंड्यूस आई इनसाइड के जगह में एन एक्स आई. सो एक्स एक्स कैंसिल. देयरफॉर मैग्नेटिक फील्ड फॉर ए सोलेनॉइड एक्सिस में म्यू नॉट एन आई. म्यू नॉट एन आई इज अ फार्मूला. इज अ फार्मूला वी लर्न ऑलरेडी. म्यू नॉट एन आई इज अ फार्मूला. सो आपको एम्पियर सर्किट लॉ ऑलवेज यूज करना पड़ेगा. पीपल को ये भूल जाएगा एम्पियर सर्किट लॉ. नॉर्मल फार्मूला डायरेक्ट फार्मूला है तो करेगा, नहीं तो नहीं करेगा बोल तो नहीं आएगा रैंक्स. आपको ये फार्मूला भी डिराइव करना भी सीखने का, तो ये एप्लीकेशन समझ में आ जाएगा. ओके हो गया. अंडरस्टूड. कॉपीड. कॉपी करो. सो इसका न्यूमेरिकल्स करेंगे. म्यू नॉट एन आई इज अ फार्मूला फॉर मैग्नेटिक फील्ड फॉर अ सोलेनॉइड. एन इज द नंबर ऑफ टर्न्स पर यूनिट लेंथ. कॉपीड. चलो
इसको न्यूमेरिकल्स करेंगे, करो. A solid of length 0.5 meters has a radius 1 centimeter and made up of 500 turns are there. It carries a current this much. What is the magnitude of magnetic field inside the solid? B value asking. That's it. So whether it is ideal solid or finite solid, how to know? Because R is 1 centimeter, is very small, and length is L is point. much greater than R. That's why it is ideal solid. But whenever mention ideal solid ka use karo always. So magnetic field inside the solid formula is mu naught N I. Use karo. Here what other things are given? L is 0.5 meters. Radius 1 into 10 power of minus 2 meters. And number of turns is 500. It carries a current I is equal to 5 ampere. What is the magnitude of magnetic field inside the solid? Magnetic field B value. And small n will be number of turns per unit length. Unit length is 0.5. So total small n is 1000. No substitute. So 6.28 into 10 power minus 3 plus. Oh, correct कर दिया. Okay, B is equal to mu naught and M. Mu naught is 4 pi into 10 power of minus 7 into number of turns 1000, 10 cube into I is 5. So it is 20 pi into 10 power of minus 4 Tesla. If you want, you can simplify further. 3.14 लेके solve कर सकते हैं. सच में समझ आया? Okay, चलो. No fine करो. Next one. The magnetic field at the center of 50 centimeters long solenoid is this much. So magnetic field दे दिया ना axis में 4 pi into 10 power of minus 2 Tesla. And when the current is flowing 8 amperes through it, what is the number of turns in the solenoid? N capital N equal how much? Small n 8, capital N I want. Okay. So since magnetic field is given, directly use the formula and find small n. Then try to find capital N. We know that Ni n is small. So कितना? So 6.22 into 10 power 3. मल्टीप्लाई करो कितना होगा देन नंबर ऑफ टर्न्स आ जाएगा ना 4 pi into 10 power of minus 2 is equal to 4 pi into 10 power of minus 7 minute value into n I is 8. So 4 pi cancel. So 10 power of So minus we 7 is want 10 power 5. Huh? small number of turn n by L, right? N is equal to n by L, right? Yeah. So n They equal want. to NL. Okay. N into L. So 1 by 8 into 10 power of 5 into L is the given length is how much? 50 50 centimeters. centimeters. So 50 into 10 power of minus 2. Okay, if you solve, you will get as
6250 tons. Yes. Okay. So solenoid done. So in this magnetism, we learned straight wire, circular wire, and then solenoid. Three shapes we done. Okay. They we will go for toroid also. Toroid also will try to finish. Then खत्म magnetism done हो जाएगा. Then we have to go for moving charges के बारे में we have to learn. Okay. चलो. Toroid. Toroid means nothing but toroid means a simply solenoid I will bend in the form of circle. That is called toroid. Same solenoid only. And you know, formula also will be same. Mu not ni आएगा magnetic field. Center में anywhere on the core में mu not ni आएगा. We will derive also. Okay. This is the formula. We will get the toroid. Toroid समझ में है? So what is toroid? A solenoid bent in the form of closed ring is called solenoid. Simple. I just bend किया ऐसा. That is called toroid. Now our interest is to calculate toroid inside, outside, and surface में by using Ampere circuit law. By using Ampere circuit law. So whenever नया shape दिया, कुछ भी दिया, Ampere circuit law use करो. That much important है. Okay, Ampere circuit law. This is the fold किया ऐसा. Otherwise we can like this. Okay. So here inner radius is A, coil का. Outer radius is B. Okay. And general point is smaller. You will take always. Okay. So our interest is to calculate inside एक point ले लो, point P, outside point Q, and here somewhere here R. So 3 points में we are interested to calculate magnetic field. So कितना है by using Ampere circuit law we are solving. Okay. चलो. First we'll go. It is open space interior of the toilet. So point P में I want to find magnetic field at this point. Okay, inside anywhere. Okay. Now try by using Ampere circuit law. Closed integral B dot dl is equal to mu naught times of I inside. Right. So what is the first step? Wherever you are trying to find magnetic field, we have to put one Ampere's loop, imaginary loop. Okay. इसके अंदर में can you tell me इसमें करंट फ्लो है ना, zoom zoom ऐसे जा रहा है ना, करंट इज फ्लोइंग लाइक दिस, राइट? इसके अंदर लूप के अंदर में कितना करंट है? इस लूप के अंदर में हाउ मच करंट इज फ्लोइंग इन दिस कॉइल? देखो करंट इज फ्लोइंग लाइक दिस लाइक दिस लाइक दिस लाइक दिस. इसके एम्प्टी स्पेस में कितना करंट है? 0. 0. सो आई इनसाइड इज 0 मींस मैग्नेटिक फील्ड कितना होगा? 0. 0. सो ये फर्स्ट स्टेप में इनसाइड में देयर इज नो मैग्नेटिक फील्ड. इनसाइड में देयर इज नो मैग्नेटिक फील्ड. ओके, ड्रॉ करो. Okay. Now we will see the outside point. Outside point में we are trying to find now. Okay. Now we will draw the outside point. देखो same diagram में I want to find center से Q point में I want to find magnetic field. Outside point. Okay. So उसके लिए first of all understand the current is flowing like this, right? The current is flowing, right? Either that means indirectly देखो इधर से dot इधर से cross, right? ऐसा रहेगा ना, dot cross dot cross ऐसा रहेगा. ऊपर से जा रहे हैं नीचे आ रहे हैं, ऊपर से जा रहे हैं फिर से पीछे, पीछे से ऊपर नीचे जा रहे हैं ऐसा. ओके चलो. नाउ वी विल यूज द एम्पेयर सर्किट लॉ. वी आर ट्राइंग टू फाइंड मैग्नेटिक फील्ड. ओके, सो फर्स्ट राइट द फॉर्मूला. क्लोज इंटीग्रल B डॉट dl इज इक्वल टू म्यू नॉट टाइम्स ऑफ I इनसाइड. सो वेयर एवर यू वांट टू फाइंड द मैग्नेटिक फील्ड क्या करेंगे? फर्स्ट वी हैव टू मेक ए इमेजिनरी लूप दैट शुड पास अस थ्रू दैट पॉइंट. So I pass the point. There is Ampere's loop हो गया.
Okay, next step is give the loop direction. Here how many currents are there, tell me? How much currents are there here? देखो, वन Three. टर्न में नंबर ऑफ करंट इज आई, वन टर्न में, एन टर्न्स में, कैपिटल एन टर्न्स में एन आई, एन आई इज अ फॉर्मूला. ओके, नाउ इफ यू सी हियर टू करंट्स आर देयर, वन इज आउटसाइड वाला, वन इज इनसाइड वाला, राइट? मतलब इनडायरेक्टली एम्पेयर लूप के अंदर में दो करंट्स आर देयर. ओके, वन इज आउटसाइड वाला, इनसाइड वाला. ओके, सो व्हाट इज द नेक्स्ट स्टेप? नेक्स्ट स्टेप क्या करेंगे? वी हैव टू गिव द लूप डायरेक्शन, राइट? लूप डायरेक्शन एंटी क्लॉकवाइज ले लिया, राइट? एंड इसमें से which one is positive, which one is negative, tell me? Curl the fingers in the direction of loop direction. Thumb wala which current? This current or this current? ये वाला dot वाला, that is taken as positive and remaining वाला taken as negative. समझ में आ रहा है? Shyam, curl the fingers in the loop direction and thumb indicates the positive current. So this is dot and dot at the outside, cross at the inside, right? So this is positive current. So that means closed integral b dot dl is equal to mu naught times of दो करंट है. दिस इज पॉजिटिव करंट विच आई कॉल्ड एन आई. मतलब देखो एन एन आर देयर, एन टर्न्स आर देयर, राइट? एन आई माइनस नेगेटिव करंट कितना होगा? एन आई, बिकॉज दिस आल्सो नंबर ऑफ टर्न्स आर दैट मीन द सेम नंबर ऑफ टर्न्स, राइट? एन आई. सो क्या होगा? मैग्नेटिक इज जीरो. मतलब आउटसाइड भी मैग्नेटिक नहीं है. टॉरॉइड स्पेशलिटी दैट ओनली, टॉरॉइड में ओनली इन द कोर में मैग्नेटिक विल बी देयर. देयर इज नो मैग्नेटिक आउटसाइड एंड इनसाइड, ओनली इन द कोर में magnetic field will be there. Okay, since we have two currents, that's why zero आ गया magnetic field outside. Ampere circuit law. Now we are trying to find inside point, core में. Okay, कहाँ बेटा? Okay, चलो. Now our interested to calculate the point Q, इधर ले लो, इस point में, इस point में we are trying to find the magnetic field inside the core में, inside the core में. Now try करो, देखते हैं. inside the core में, इस point में I want to find magnetic field. So क्या करेंगे? First we will try to draw an imaginary loop. वो draw कर लिया imaginary loop and write the formula. Closed integral b dot dl is equal to mu naught times of I inside. Right? Okay. Now, second step, give the loop direction. So here तो इधर तो क्रॉस है ना पूरा, inside there is इस लूप के अंदर में only one current है, two currents है? Tell me. Inside of the loop में you have only one current or two currents? One. One current only is there, which is inverse, right? So मैं क्या करूँगा? I am giving the loop direction as clockwise, so that easy for me. Okay, so that it will become positive. Okay. Now what will be the current inside? Tell me. इस लूप के अंदर में करंट इनसाइड कितना होगा? टेल में. टोटल नंबर ऑफ टर्न्स इज n. इसके लूप में एक ही करंट है ना, सो एन आई, इधर एन आई. ओके, नाउ b इज कांस्टेंट, मैग्नेटिक फील्ड इनसाइड द लूप इज कांस्टेंट, सो b विल बी कमिंग एंड क्लोज इंटीग्रल dl लेंथ ऑफ द, ये कितना होगा? लेंथ ऑफ द लूप, एम्पेयर लूप कितना है? सर्कमफ्रेंस ऑफ ए सर्कल, राइट? व्हिच इज r, सेंटर रेडियस इज r, सो इट इज 2 pi r. 2 pi r is equal to mu naught ni. Therefore the formula in a toroid का formula में mu naught ni by 2 pi r. चलो first, magnetic field is mu naught ni by 2 pi r. Magnetic field at this point Q, which is inside the core. Inside the core only magnetic field will be there. Outside, inside में नहीं रहेगा. So it is depending on R, right? Whether it will be changing where as the R is as R increases, magnetic field is changed, right? Inverse relation. Yes. Can you tell me maximum value किधर रहेगा? Is inverse proportional to R, right? So whether it is here or outside of the core, like here circumference inside coil or outside coil,
maximum value of magnetic field inside the coil. inside, because smaller the radius, bigger the maximum value, right? So maximum value formula will be mu naught n I by 2 pi, instead of r is a. This is maximum value. Very important formulas. Here r equal to a, right? Similarly minimum value किधर होगा? R equal to B में. So what is the formula? Mu naught n I by 2 pi b. This is the minimum value. When I've said the maximum directly, you know the inner side minimum maximum volke. So try to write the formula this one. Okay. Now suppose if they ask what is the length of the toroid, बोलेगा length of the toroid. So कौन सा length use करेगा? Circumference. हाँ? Circumference 2 pi. Circumference of किसका? Whether 2 pi b या 2 pi a ना 2 pi r कैसे लेगा? R तो मतलब छोटा, सी if you एक इधर से कॉपी ना, ओके कॉपी कर बोले. If they ask find the length of the this one, tell me find the length of the toroid. How to find length of toroid? If you cut and elongate, the length will be like this. First one 2 pi b होगा, बड़ा है ना. छोटा वाला will be like this, छोटा हो जाएगा 2 pi a, because inside radius कट करके extend किया तो इतना ही आएगा. Now which one will take? अगर r का लिया तो 2 pi r आएगा, सम बीच में तक रहेगा. ओके ये बड़ा रहेगा सबसे बड़ा. हाँ, सो विच लेंथ विल टेक? इसके लिए वी कैन नॉट टेक बड़ा वाला छोटा वाला समवेयर, राइट? सो वी शुड टेक आर एवरेज. ओके, आर एवरेज का एवरेज रेडियस बोलते हैं, एवरेज रेडियस बोलते हैं. सो आर इज इक्वल टू ए प्लस बी बाई 2 लेने का, आर एवरेज लेने का. ओके देन सो लेंथ विल बी फॉर्मूला क्या होगा? 2 पाई R average we should take whenever they given A and B. If they tell to find the this one, you try to find R average length, 2 pi R average, because R is not given. Question में नहीं देगा, A value देगा, B value देगा. Find the length of the toroid means A, we cannot put A, we cannot put B. R average length of the toroid is 2 pi R average. So now if they ask B, in this case में B inside that average value I want. Now tell me what is the formula? B toroid का inside में what is the formula था? Mu naught n I by 2 pi R average learn करने का. This is R average. Okay, so समझ में आ रहा है? Before R था ना, so we cannot find R. In A and B will be given. That's why R average. Similarly इसको मैं simplify करूँगा. This is nothing but 2 pi R average, nothing but length, right? So B inside average value कितना था? Mu naught n I by L, right? Length of the conductor. This is nothing but. And what is number of turns per unit length? किसका होगा? Number of turns per unit length is nothing but small n. So mu naught ni. So this is the formula we have to learn toroid ka inside the thing. Mu naught ni is the formula. N is number of turns per unit length. Length कौन सा use करेगा? 2 pi R average we have to use. So mu naught ni is for solid, and toroid ka formula also mu naught ni only. So easy to remember. Ni is the mu naught ni. N is the number of turns per unit length. Length किसका? 2 pi R average लेने का. Maximum minimum means directly you can find A and B वाला. Okay, समझ में आ रहा है वाला? This is the basic formula. R magnetic field at R है, but R is they will not give कौन सा बोल के A and B value will be given. So R average लेके solve करने का. Okay, चलो न्यूमेरिकल्स करेंगे. अगर a toroid has a core inner radius, देखो A value is given, B value is given, number of turns are given, and current is given. What is the magnetic field inside the core, out of the toroid, and empty space surrounded by the toroid?, मतलब तो मैं
See, inside the core means here. Okay. Second one is outside is here, and in the empty space is here. So इसका कितना होगा magnetic field? 0. 0. ये दोनों 0 आएगा. Now try to find inside the core of the toroid magnetic field. He has given this is 20 centimeters and outer radius is 22 centimeters. नो आर वैल्यू नहीं दिया, इनसाइड में कितना सेंटीमीटर से नहीं दिया. दैट्स व्हाई यू यूज आर एवरेज फाइंड करो एंड सॉल्व. कितना सर? So 4 and 10 power minus 2. Yes, 4 into 10 minus 2 Tesla. Tesla is a magnetic field units. P average mu naught Ni by 2 pi R average. R average कितना होगा? A plus B by 2. तो कितना है? सेम आंसर है. 4 into 10 power minus 2 Tesla is the answer. Next one. A coil wrapped around toroid has inner radius is given, outer radius is given. If the maximum field, देखो maximum field का फॉर्मूला आ गया, that is given. In that condition में find the minimum magnetic field inside the toroid. .12 millitesla. Options are given. $7.68. Yes, 7.68 Tesla. Yes, sir. Yes. So you can do like this also. B max find karo Sriram and B minimum formula लिख लो. Okay. Then divide. We want B minimum magnetic field, right? Because maximum is given, right? So B minimum by B maximum divide कर लो. So from this everything some cancel हो जाएगा. If you multiply this B max to this side, we'll get B minimum. Okay. So answer is 7.68 millitesla. Maximum formula याद है? Sriram, tell me. mu naught Ni by 2 pi A by 2 by B. Maximum means mu naught Ni by 2 pi A. So if you mu naught Ni cancel, 2 pi cancel, nothing but A by B. Now A is given.
that is inner radius, outer radius is given, and B max also given. Just multiply. We'll get the answer as 7.68 in milliliters. Chalo. Now one more application is the last application is there. Magnetism done. And Sunday I'm going to take test. कर सकते हैं मैग्नेटिज्म, ओनली मैग्नेटिज्म, बायोट लॉ, स्ट्रेट वायर, सर्कुलर वायर, सोलेनॉइड, टोरॉइड, खलास, सिंपल. ओके, इस बार मार्क्स थोड़ा कनिष्म इसमें तो लेके आओ, 100 में कम से 8 80s 90s में तक लेके आओ. सब पीपल को तीनों मिलके 90s में आ रहा है, बहुत डिफिकल्ट है. ओके, चलो. नो magnetic field due to large and thick current carrying sheet. This is advanced model है, टेंशन नहीं लेने का, डरने का नहीं है. ओके, a large and thick sheet में, a sheet का thickness is width is d and magnetic field is inverse. ऐसा पूरा magnetic field is inverse. Our interest is to calculate magnetic field outside and inside point. That's it, by using Ampere Circuital Law. Okay. So current density, since some thickness and area is there, right? So current density we are using, we know already current per unit area. We want to draw the graph initially. I want finally, they'll give like this shape, they will give the, which of the graph is matching. As we go away from the axis, say, if you go far away, what is the magnetic field, how it is increasing or decreasing, we want to find. Okay. Chalo. Karenge? I want to find first magnetic field. This is the direct. So either say, y distance दूर में I want to find magnetic field at this point P. This is axis, this is y equal 0 ले लेंगे, because graph draw करने के लास्ट में symmetry रहने के लिए y equal this axis से P point में I want to find magnetic field. This is a magnetic field direction, right? समझ में आ रहा है ये वाला? Okay. No, this is current. Current is which direction now? Current is going inwards or outwards? Current is pura inwards. Pura inwards. Pura. Okay. I want, because of current carrying, whenever there is a current, there is a magnetic field. So magnetic field at point P में कितना and inside कितना है, we want to find. Try करो थोड़ा, some steps add हो जाएगा, बोलो. What is the first step? We want to draw the Ampere's loop. Ampere's loop, any shape we can draw. I am drawing a rectangle shape. Outside to outside ले रहा हूँ. This is Ampere's loop. Same thing हम लोग solenoid का कैसे किया ऐसे ही Ampere's loop. Okay, name it A, B, C, D. And this is Y means this also will be Y, symmetric के हिसाब से. So length is 2y. And इसका width is x मान लो. Okay, now formula लिखेंगे. Closed integral B dot dl is equal to mu naught times of I inside. Okay. Now, which loop का we have to apply? All loops, right? A, B, B, C, C, D and D A का apply करने हैं. Okay. First loop direction देंगे. Loop direction tell me clockwise लूँ और anti-clockwise लूँ. Loop direction. Tell me. Clockwise. Clockwise. So that for us inside में it is easy for us. Clockwise. And DL should be in the direction of the DL loop direction only. DL, DL, DL and DL. Okay. तो मैग्नेटिक फील्ड देखेंगे एक बार. इनसाइड कैसे देखो, थंब इंडिकेट डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड. ऊपर डायरेक्शन में आपको मैग्नेटिक फील्ड इज ऐसा, इनसाइड ऐसा. एंड नीचे में देखो मैग्नेटिक फील्ड इनसाइड इट इज ऐसा, ऑपोजिट डायरेक्शन में है. समझ में आ रहा है? ये पूरा ऑपोजिट डायरेक्शन मैग्नेटिक फील्ड. देखो ऊपर में एक्सिस में लगाओ, थंब इंडिकेट डायरेक्शन ऑफ करंट एंड कर्ल्ड फिंगर्स इंडिकेट डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड. सो मैग्नेटिक फील्ड इज क्लॉकवाइज उस डायरेक्शन में, एंड थंब इंडिकेट डायरेक्शन ऑफ करंट एंड कर्ल्ड फिंगर्स इंडिकेट डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड ऑपोजिट डायरेक्शन. ये तक आया? समझ में? देखो इट इज इनवर्स, करंट इज इनवर्स राइट. सो थंब इंडिकेट डायरेक्शन ऑफ करंट, ऊपर डायरेक्शन देखो, ऊपर इज क्लॉकवाइज, मतलब राइट साइड है लेफ्ट साइड है? राइट साइड आ रहा है. नाउ सेम वे if I see downwards, it is left side. Sir, at what point are we checking? Here, axis. Y equal 0 point में. Axis में we are checking. देखो ऊपर ऐसा, downwards ऐसा. Magnetic field I'm talking about. Okay. Current नहीं है, magnetic field. Okay. ऊपर ऐसा right side and नीचे left side. Okay.
now apply karo now this one closed integral b dot dl is from a to b plus closed integral b dot dl from b to c plus closed integral b dot dl from c to d plus closed integral d to c d to a b dot dl सभी का we are applying the loop is equal to mu naught times of I inside. Okay. Now tell me which one is zero, which one is a to b बोलो. A to b zero ना, not zero ना, कैसा? A to b में देखो magnetic field is किस तरफ रहेगा? इस तरफ है. And dl also same direction. So zero cos zero आएगा. So that means इसमें तो closed integral a to b b dl cos zero. Okay. Plus b to c कितना होगा? B to c dl is downwards. Magnetic field is like this. Angle is 90. dl is loop direction का. Magnetic field तो ऐसा है ना. So it is 90. So it is 0 हो जाएगा. A 0. And c to d क्या होगा? c to d में dl and magnetic field दोनों same direction है. So ये रहेगा. कौन सा c to d? c to d b dl cos 0. Plus हाँ d to a देखो d to a dl is like this, magnetic field is like this. So angle is 0, 90. So ये निकल जाएगा. तो इसको सॉल्व करेंगे. b will be coming outside. What is dl 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 मिल गया तो कितना होगा? a लेंथ का a to b का x है ना, x है. So first one b into x आएगा. Plus cd का बोलो, cd का dl 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 addition is nothing but x only. So this also bx is equal to mu naught times of I inside. So you are understanding? Our intention is to find the graph. Finally, b versus distance graph find करने का. उसके लिए we are finding some relationship. Okay, so bx plus bx is 2bx is equal to mu naught times of now tell me इसके अंदर में करंट कितना है? करंट कितना है? टोटल करंट तो आई है, बट इसमें करंट कितना है? So that's why we are using a area है ना, area wise है ना, we are distributing the we are using the current density. Current density is equal to current per unit area. इस लूप का एरिया कितना है? टेल में. इस लूप का एरिया इज हाउ मच? Which one you should take? देखो एरिया कौन सा? Wherever the current carrying is there, उसका एरिया only you should take, right? We should not take complete area. So इसका width कितना, इसका thickness कितना? टेल में. इसका width is how much, इसका thickness is how much? देखो इसका लेंथ width is d, length is x, right? So we should not take इसका नहीं लेने का, because current is not passing in this, right? इसमें current जा रहा है, right? So इसका mu naught I inside के जगह में x into d, length into breadth, right? So इसमें क्या होगा? bx ऐसा ना, x cancel. So therefore b is equal to mu naught by 2 times d into j, right? Into j, right? Because j is equal to current per unit area, right? Area into j, right? Area into j is current inside. So d into j और jd लिखो आपको mu naught j into d by 2. That means here whether it is depending on y, tell me. In this expression में whether depending on y, मतलब इसमें outside में magnetic field does not depend on y. Outside the constant है magnetic field. Okay. Now same thing, can you find inside point? Try करो. Inside का try करो. कोशिश करो always. Same way we are trying to find inside point. मतलब I want to find at this point P is here. I want to find either say I can take y distance, same y distance from here to here, y distance दूर में. I want to find the magnetic field at this point. Same कहानी. First we are take the loop which is rectangle shape. Okay, and this is y means this is also y, and this is x. Same कहानी करो, try करो. So loop direction clockwise. So magnetic field also
एबो तो ऐसा है मैग्नेटिक फील्ड, एंड बिलो तो ऑपोजिट डायरेक्शन. नेम इट ए बी सी डी and use the formula. Closing del B dot dl is equal to V naught times of inside. और ट्राई करो, देखते हैं who will tell. लेफ्ट साइड सेम ही आएगा, लेफ्ट साइड विल बी सेम. bx plus bx will be 2bx. V naught times of I inside के जगह में क्या डालूं देखते हैं. In So do terms you of want current density, हाँ b चाहिए. हाँ mu naught jy? yes, very good, super. Okay, so I inside is nothing but J is equal to current per unit area and I is equal to J into A. Okay, J into area. इस लूप का एरिया कितना होगा, बिकॉज पूरा करंट जा रहा है ना इसमें. सो D इज विड्थ एंड लेंथ इज ये कितना 2y, राइट? y प्लस y लिया ना, 2y इंटू एक्स, राइट? सो 2y इंटू एक्स, राइट? 2y इंटू एक्स. ओके, नाउ देखो इधर क्या क्या है, 2 कैंसिल, x कैंसिल. सो b इज इक्वल टू म्यू नॉट j y. So now b is depending on y, right relation. मतलब as we go from axis से as we go away, the magnetic field is increasing. बाद में क्या होगा, constant हो जाएगा, बाद में constant हो जाएगा. So if I draw the graph between them, if I draw the graph, this is the magnetic field versus y, and देखो ये y is what? Y is nothing but d by 2. y is d by 2 आधा, and ये नीचे भी आधा, राइट? ये दोनों मिलके d आएगा ना. So I can write like this, minus d by 2, bottom में minus d by 2, this is plus d by 2, right? इस पॉइंट में, स्टार्टिंग पॉइंट में it is plus d by 2, this is minus d by 2. So क्या होगा इधर तक, ये minus d by 2 plus d by 2 तक क्या होगा, normally it is direct relation, right? b is proportional to y. ऊपर तक ये सरफेस एंड ये सरफेस तक आपको magnetic field goes on increasing because direct proportional to y. बाद में क्या होगा, it becomes constant, जैसे constant हो जाएगा. Is a graph. Okay, magnetic field versus distance का graph is like this. So they'll give any shape, he will tell to find how the variation of the magnetic field means. You have to go like this Ampere Circuital Law. Ampere Circuital Law is best one. Biot Schwarz Law अभी नहीं करने का, आगे का small dl element लेके इंटीग्रेशन करके बहुत मुश्किल है. Ampere Circuital Law से easily you can solve any type of shapes का. समझ गया? By this complete magnetism done, complete हो गया, पूरा all topics done.